हाय एवरीवन, वेलकम टू कैरियर टॉक्स। इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2021 का पीआईबी एनालिसिस एंड उसका समरी देखेंगे। ओके, और जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एंड स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होती है। जो पहला पीआईबी हमारा है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इज किकिंग ऑफ एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज विद द पोटेंशियल एयरलाइन ऑपरेटर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ports, shipping and waterways उन्होंने is initiating the process called sea plane services on the selected routes of India। ओके, जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स है उन्होंने सी प्लेन सर्विसेज स्टार्ट करने का इनिशिएशन लिया है, जो कुछ सेलेक्टेड रूट्स में हमारे इंडिया के कुछ अक्रॉस द कंट्री कुछ सेलेक्टेड रूट्स है जहां वो चलेगी। एंड इट इज अंडर अ स्पेशल पर्पस व्हीकल और जो किसके द्वारा बनाई जाएगी, फ्रेमवर्क थ्रू दी ऑपरेशनल एयरलाइन ऑपरेटर्स। ओके, एंड द प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन किसके द्वारा हो रहा है, थ्रू दी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी limited। Okay, and what is the origin and destination of these seaplane services? The proposed origin and destination pair are under the hub and spoke model। Okay, hub and spoke model। hub it means जहां से एयरप्लेन सर्विसेज टेक ऑफ होंगी, एंड स्पोक मॉडल जहां पे वो चीज जाके लैंड होगी। ओके, जैसे कि इंक्लूड वेरियस आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप। ओके, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, गुवाहाटी रिवर फ्रंट, ओमंडरोसो रिजर्वायर इन आसाम, and Yamuna riverfront, and Delhi as a hub to Ayodhya। So Delhi as a hub to Ayodhya, it means hub means Delhi is a hub, and where that seaplane services take off and land to Ayodhya। इस तरीके से पूरे ऑल ओवर इंडिया में अक्रॉस द ऑल ओवर इंडिया में कुछ कुछ स्पेशल रूट्स होंगी जहां पर ये सीप्लेन सर्विसेज चलेंगी। ओके, एंड आप देख सकते हैं श्रीनगर, चंडीगढ़, then other tourist places of Punjab and Himachal Pradesh, and Mumbai as a hub to Shirdi, Lonavala, Ganpatipule, and Surat as a hub to Dwarka। Okay, and Mandvi, Kandla, Khandelshi Dam, Nagpur। Okay, and Irai Dam, चंद्रपुर। ओके, सो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हब हो गए जहां से वो ढेर सारी सी प्लेन सर्विसेज अलग अलग लोकेशंस के लिए चलेंगी, जैसे कि मुंबई एज अ हब टू शिरडी, लोनावला, गणपतिपुले। ओके, एंड जैसे सूरत एज अ हब टू द्वारिका। सो यह डायग्राम जो दिस इज द डायग्राम ऑफ सी प्लेन। ओके, एंड ये मैप है, मैप में ये लोकेशन है जहां जहां पे ये सी प्लेन सर्विसेज चलेंगी। And note that one such seaplane services is already in operation between Kevadia and Sabarmati riverfront in Ahmedabad। What is the benefit of these seaplane services? It provides a connectivity and easier accessibility to remote locations, and the Sagarmala Development Company Limited is exploring plans to leverage the potential of the west coastline and numerous water bodies across the India by commencing seaplane operations। So जो हमारी HDCL जो कंपनी है जो इसे इम्प्लीमेंट कर रही है, वो इस तरह की अभी भी ढेर सारी पोटेंशियल कोस्ट लाइंस एंड न्यूमरस वाटर बॉडीज जो कि जहां पे ये सी प्लेन सर्विसेज कमेंस हो पाए उसके लिए अभी भी सर्चिंग चल रही है कि और कहां पे ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। ओके, एंड सी प्लेन विल यूटिलाइज नियर बाय द वाटर बॉडीज फॉर टेक ऑफ and landing, and note that the infrastructure like runway, terminal building are not required for the seaplane operation, and the seaplane services will be a game changer, which provide a supplementary means of faster and comfortable transportation across the nation, and it will save the travel time and stimulate localized short distance travel, especially in the hilly regions across the rivers and lakes, and it will also boost the tourism for domestic and international holiday makers। तो ये थे benefits about the seaplane services। Okay, and then the next thing that we have to study, that is the project Sagarmala। So project Sagarmala actually है क्या? सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। The concept of Sagarmala was approved by the Union Cabinet on the 25 March 2015 and as a part of a program called a National Perspective Plan। Okay, so as a part of program of National Perspective Plan, Sagarmala project को initiate किया गया। Okay, and
and it is for the comprehensive development of India's 7,500 kilometer coastline and 45,500 kilometer of potentially navigable waterways and maritime sector. Okay, then why the need for port-led development in India? Okay, because India is one of the fastest growing large economy in the world with a GDP growth rate of 7.3% in 2018-19, and ports play an important role in the overall economic development of the country. And approximately 95% of the India's merchandise trade passes through the sea ports. Okay, many ports in India are evolving into centers of economic activities and services, and are vital to sustain a future economic growth of the country, such as Jawaharlal Nehru Port, Trishmundra Port, Sikka Port, and the Hazira ports, etc. So these are the ports which helpful to for the growth and for the growth of our economy. So that's why we need a port-led development in India. And note that around the 87% of the Indian freight uses या तो either a road or या तो railway transport use करते हैं. That's why. And although water and borne transport is much safer, cheaper, and cleaner compared to the other modes of transport, and it accounts for the less than 6% of the India's model split. So ये था, that's why we need a port-led development in India. Okay, what are the concept and objectives of the project Sagarmala? Okay, so Sagarmala project के कुछ objectives क्या है? Reducing the cost of transporting domestic cargo through the optimizing model mix, optimizing time cost of EXIM container movement, lowering logistic cost of bulk commodities by locating future industrial capacity, and improving export competitiveness by the developing port and discrete manufacturing cluster. So ये कुछ important objectives हैं जो आप अपनी notebook पे note कर सकते हैं. Then what are the components of Sagarmala program? That is a port modernization and new port development. Then second one is port connectivity enhancement, port linked industrialization, coastal community development, and the coastal shipping inland waterways ट्रांसपोर्ट इम्प्यूटस. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सागरमाला प्रोग्राम. एंड इसके अंदर क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ न्यू ग्रीनफील्ड पोर्ट्स. ओके, देन द पोस्ट कनेक्टिविटी एनहांसमेंट में क्या होगा? एनहांसमेंट द कनेक्टिविटी ऑफ द पोर्ट्स टू द हिंटरलैंड, optimizing cost and time of cargo movement through multi-modal logistic solutions including domestic waterways. Okay, then the port linked industrialization, it means developing a port proximate industrial cluster and coastal economic zones to reduce a logistic cost. Okay, and then these are the important components of the Sagarmala program. Then the fourth one is the coastal community development. इसमें क्या होने वाला है? Promoting sustainable development of coastal communities through the skill development and the livelihood generation activities. And the last one is the coastal shipping and inland waterways transport impetus. In this, to move a cargo through the sustainable and environmental friendly coastal and the inland waterways mode. So ये थे कुछ important components of the Sagarmala program. Okay, and what is the institutional framework of Sagarmala programs? So सबसे पहला institutional framework क्या है? National Sagarmala Apex Committee, जो किसके द्वारा चेयर होगी? Which is chaired by the Ministry of Shipping and the Cabinet Minister is from the stakeholder minister, Chief Minister or the Minister in charge of ports of maritime state. And इनका role क्या होगा? Overall policy guidance, high level coordination, approve national perspective plan, review the various aspects of planning, review the guidance for implementation. So इस तरीके के 1, 2 and 3 committees हैं under the Sagarmala institutional framework. Then the second one is a Sagarmala coordination steering committee, which is chaired by the cabinet secretary, and other two you can read it from here. And the review progress क्या है? Review the progress of implementation of NPP and detailed master plan of this project. And then and also have led to a role to provide a coordination between the efforts of various ministers, state government agencies. Okay, then the third one is the State Sagarmala Committee, which is chaired by the Chief Minister in charge of ports and relevant department agencies. And इनका role क्या होगा? Coordinate and facilitate the Sagarmala related projects and take up the matter on priority as decided in the NSAC. So ये थे कुछ committees और institutional framework under the Sagarmala
प्रोजेक्ट एंड इसको इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या फिर एज अ मॉनिटर भी बोल सकते हैं, जो इस स्कीम को मॉनिटर करेंगे एंड उसके अंदर 3 कमेटीज होंगी जो पूरा ग्रोथ देखेगी सागरमाला प्रोजेक्ट का। एंड ओके, सो हमने सागरमाला प्रोजेक्ट क्यों पढ़ा? बिकॉज it is because due to the seaplane services which is a project under Sagarmala project. Okay, so Sagarmala seaplane services हमने पढ़ लिया है एंड इस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं, जैसे ये प्लेन सर्विसेज कहाँ पर होने वाली है, देन उसके बाद उसके बेनिफिट्स देखे हमने, देन उसके बाद प्रोजेक्ट सागरमाला के बारे में हमने पढ़ा, उसके अंदर क्या फ्रेमवर्क है, क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, देन वो सागरमाला प्रोजेक्ट लेड टू द नीड ऑफ पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन इंडिया, बट व्हाई हमने उसे देखा, देन व्हाट इज द कांसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सागरमाला प्रोजेक्ट। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पीआईबी। देन हम सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं, जो इम्प्लीमेंट करने वाली है सी प्लेन सर्विसेज को। सो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट डेवलप एंड फॉर्मुलेट प्रोजेक्ट एमिनेटिंग फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान एंड असिस्ट projects like SPV set up by the central and ministry state government and provide funding window for the residual projects that cannot be funded by any other mode, and raise fund from the multilateral bilateral agencies as a debit equality and prepare the detailed master plan for the coastal economic zones. Okay, so ये कुछ important objectives है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के, जो सी प्लेन सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करने वाली है, जो उसे एग्जीक्यूट करने वाली है। सो ये था हमारा पहला पीआईबी। दूसरा पीआईबी है ट्रेफर्ड साइन एमओयू विद द अखिल भारतीय वनवंशी कल्याण आश्रम फॉर सेटिंग अप ट्राइफूड पार्क इन द मध्य प्रदेश। ओके, सो ट्राइफर्ड मींस ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड उन्होंने हैज डिसाइडेड एक्सप्लोर अ कन्वर्जेंस टू बिल्ड अ पार्टनरशिप विद द अखिल भारतीय वनवंशी कल्याण योजना। ओके, एंड जो अखिल भारतीय वनवंशी कल्याण योजना क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बीन वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड सिंस 1952। सो ट्रिफर्ड ने इस पे वर्क क्या किया है? उन्होंने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द अखिल भारतीय वनवंशी कल्याण आश्रम with the exchange between two organizations, okay, and to work together to setting up a tribe food park in 5 districts in Madhya Pradesh. Okay, so हम देखेंगे यहाँ पर tribe food park होता क्या है। Okay, so tribe food is a scheme or a park that is this scheme is a joint initiative of, ये scheme जो है joint initiative है किसकी है? Ministry of Food Processing Industry and Ministry of Tribal Affairs, that is TRIFED. Okay, and under this scheme a tertiary value addition center will be set up in Jagdalpur, Chhattisgarh. Okay, Jagdalpur in Chhattisgarh means जगदलपुर एक प्लेस है जो छत्तीसगढ़ में है, देन रायगढ़ इन महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र में जो रायगढ़ का एरिया है वो एट अ कॉस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹1100 करोड़। ओके, सो ये जो इनिशिएटिव है ये कहाँ चलाई गई थी, अभी भी चल रही है। इट मीन्स छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। अब इसमें 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जो कि इस स्कीम में ऐड हो चुकी है। ओके, सबसे पहले ये 2 जगह बस चलाई गई थी, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र में, अब ये मध्य प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट में भी चलाई गई है। ओके, एंड ट्राइफूड स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन द बैकडोर ऑफ वन धन योजना एंड विल प्रमोट वैल्यू एडिशन टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, एंड नोट दैट ऑब्जेक्टिव क्या है ट्राइफूड का, ट्राइफूड स्कीम का? ट्राइफूड एम टू इनहेंस द इनकम ऑफ ट्राइबल through better utilization of land. Okay, through the better utilization of land and their produce, and value addition to the minor forest produce that collected by the tribal forest gatherers. So ये ऑब्जेक्टिव है ट्राइफूड स्कीम का। ओके, देन यहाँ पर प्रधानमंत्री वंदन योजना के बारे में दिया हुआ, हम उसके बारे में देख लेते हैं व्हाट इट इज। प्रधानमंत्री वंदन योजना इज अ रिटेल मार्केटिंग लेड वैल्यू addition plan for the minor forest produce. Okay, and under this program MFP means minor forest produce. It based minor forest produce based tribal groups or enterprises around 300 are formed for a collection. Okay, so is main aim क्या है under this program? जो MFP है, MFP मतलब
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो ट्राइबल्स या फिर इंटरप्राइजेस उस चीज को कलेक्ट करती हैं, देन उनका एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा एंड किस लिए, फॉर्म फॉर द कलेक्शन, वैल्यू एडिशन, पैकिंग एंड मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ओके, देन जो ये ट्राइबल एंटरप्राइजेस या फिर ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, ये पहले किस फॉर्म में होंगे, विल बी इन द फॉर्म ऑफ वंदन SHGS, self help group, okay, and which will be a group of 15 to 20 members. So जो minor forest produce जो ट्राइबल ग्रुप्स जो करती हैं, जो इन पे रिलाय हैं, जो इन पे अपनी लाइवलीहुड चलाती हैं, ओके, सो इनको क्या करेंगे, इनको सबसे पहले एक 15 ग्रुप में बांट दिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड, और उसको ग्रुप का नाम क्या होगा, वंदन सेल्फ हेल्प ग्रुप। देन उस जो 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप है will be further federated into a large group of Vandhan Vikas Kendra. Okay, so ये है, this is the motto of प्रधानमंत्री वंदन योजना, okay, around 300, okay, so hope आपको समझ में आया होगा। Then जो ये स्कीम है, जो वंदन प्रधानमंत्री वंदन योजना है, that is supported by the TRIFED, okay, TRIFED will support the Vandhan Vikas Kendra through providing them a model business plan, processing plan, and tentative list of equipments. Okay, so this is about the Pradhan Mantri Vandhan Yojana. Then minor forest produce का हम देख लेते हैं। Minor forest produce actually में है क्या? Under the Forest Right Act of 2006, minor forest produce include all non-timber forest produce of plant origin, including bamboo, brush, wood, stump, cane, tushar, cocoons, honey bags, lake tendu, or kendo leaves, medicinal plant, herbs, roots, tubers. So these are the non-timber forest produce. Okay, so ये definition है under the Forest Right Act of 2006. Okay, and majorly of the tribal lives in the forest area depend on a large extent for their livelihood, income generation on the minor forest produce. And minor forest produce also a form of a major portion of food, fruits, medicinal, other consumption items for the tribals. And note that for the forest dwellers are legally empowered with the ownership and government act through the PESA Act, which is a Panchayat extension to Scheduled Area Act 1996, and the Forest Right Act, which is 2006. तो उन्हें उस ये दो एक्ट से उन्हें and that are legally empowered with their ownership and having a rights जो PESA Act and the Forest Right Act उन्हें प्रोवाइड करती है। Then ये है कुछ types of anti-FP national national, it's not national, it is a non-timber, it's a non-timber forest produce. So और plants के part हैं, यहाँ पर types of non-timber लिखे हुए हैं, जो आप यहाँ से अपने notebook पे आराम से लिख सकते हैं। This is the source of IIFM 2017. Okay, then the next one is scheduled area and other traditional forest dwellers recognition of Act 2006 also give right to the tribals। कुछ जो फॉरेस्ट डेवलपर्स में होते हैं, उन्हें कुछ राइट्स मिला होता है अंडर दिस एक्ट। वो क्या है, द राइट ऑफ ओनरशिप, एक्सेस टू कलेक्ट, यूज एंड डिस्पोज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस व्हिच हैज बीन ट्रेडिशनली कलेक्टेड विद इन और आउटसाइड द विलेज बाउंड्रीज। एंड द एक्ट वाज इनेक्टेड to protect the marginalized social income classes of citizens and balance the right to environment with right to life and livelihood. Okay, so ये था एक्ट जो किस तरीके से उन्हें राइट्स दे रहा फॉरेस्ट डवेलर्स को। सो हमने कुछ एक्ट्स देखे हैं जिन्हें फॉरेस्ट डवेलर्स एंड ट्राइबल्स को कुछ राइट्स मिलता है। द फर्स्ट एक्ट that is PESA, PESA, Panchayat Extension Scheduled Area Act, and the second one is the Forest Right Act 2006. Okay, and the third act is the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Recognition of Forest Right Act 2006. Okay, then so एक स्कीम चलाई गई फिर, and then scheme that is going on for the promotion of tribals, a product that is mechanism for marketing of minor forest produce through minimum support price. ओके, सो इसके अंदर क्या होगा, फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे मार्केट में बेचे जाते हैं, वो किसी के द्वारा क्या होता है, उनको एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाती। दैट्स व्हाई अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इन चीजों को सपोर्ट कर रही है एंड उन्होंने एक स्कीम चलाया है दैट इज
minimum support price for minor forest produce. Okay, minimum support price for minor forest produce. So ये स्कीम है जो क्या इंश्योर करेगा, टू इंश्योर द फेयर रिटर्न टू द forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers and as a solution to the problems. Okay, and objective of providing a fair price to the MFP gatherers. MFP means minor forest produce gatherers, enhance their income level, ensure the sustainable harvesting of MFPs, and the objective of MSP for MFP scheme. MSP means minimum support price for the minor forest produce scheme is to establish a framework for ensuring price for the tribal gatherers, primary processing, storage, transportation, etc. Okay, so this is about the tri-fed MSP, MFP. Then we know about the important rights that given to the forest dwellers or tribals. Okay, and then the we also read about the Pradhan Mantri Vandhan Yojana. Okay, that's Pradhan Mantri which Yojana? Pradhan Mantri Vandhan Yojana. Okay. So then our next PIV, that is, sorry for the pronunciation, actually मैं कहीं पे गलत कोई चीज pronounce करो उसके लिए sorry. Then the Assam Rifles Public School Shillong becomes the first Khelo India sports school from the Northeast. और ये PIV रिलीज हुई है Ministry of Youth Affairs and Forest ने. So the Union Minister of Youth Affairs and Sports name श्री किरण रिजिजू, उन्होंने एक लॉन्च किया आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल, लॉन्च दी आसाम राइफल्स पब्लिक स्कूल इन शिलोंग एज अ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंडिया स्कूल ऑन दी मंडे. ओके, एंड नोट दैट एट इंडिया देयर आर द 9 स्पोर्ट्स स्कूल हैव बीन अप्रूव्ड अक्रॉस द कंट्री, जिनमें से 5 वर मैनेज्ड बाय द डिफेंस पैरामिलिट्री फोर्सेस. ओके, एंड इन दी ये हमारे इंडिया का नहीं है कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल जो आसाम राइफल पब्लिक स्कूल है इन शिलोंग एज द खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल ऑफ इंडिया. इट्स नॉट ऑफ इंडिया, इट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ओके, इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आसाम राइफल पब्लिक स्कूल इज द फर्स्ट स्पोर्ट स्कूल अनाउंस्ड अंडर द खेलो इंडिया स्कीम. ये पूरे इंडिया की नहीं बनी है एक्चुअली में, ये इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन Assam Rifle Public School is the first sport school, okay, announced under the Khelo India scheme. What is the objective of Khelo India Sports School is to integrate sports with education in the process, develop sports in the country, improve overall profile and outlook of athletics. Okay, and note that the government shall now bear the expenses of talented sports student of the school in terms of lodging, boarding, education expenses, competitions, exposures, insurance, medical support, sports training, support salary of coaches, and etc. So ये है about the Assam Rifle Public School that become the first Khelo India support school from Northeast. Then the next PIV that we have is the CSIR NPL celebrates its 75th Foundation Day. Okay, so हम इस पे देखेंगे CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ओके, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR. सो आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021, जहां पर उन्होंने where he dedicated 2 things. First one is the national atomic time scale and second one is a भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली टू दी नेशन. एंड उन्होंने नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का फाउंडेशन भी रखा थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंस. सो एंड जो ये कॉन्क्लेव है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी व्हिच इज इन न्यू दिल्ली. ओके, एंड थीम ऑफ द कॉन्क्लेव इज मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन. So this is the theme of National Metrology Conclave 2001 and ये किसके द्वारा रखा गया ये कॉन्क्लेव, थ्रू दी CSIR. एंड उसमें आवर प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन रखा, किस चीज का फाउंडेशन रखा है, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का. एंड ही आल्सो डेडिकेटेड दी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल एंड भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली टू दी नेशन. So, and note that our Prime Minister lauded that Indian scientists for successfully developing 2 Indian COVID vaccine, and he said India COVID vaccine program is the largest in the world
and is about to started. ओके एंड अब हम इसमें कुछ कीज देखेंगे जो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में हुई एंड उसके बारे में हम रीड करेंगे. There are the some key events of the 2021 National Metrology Conclave. First one is the National Atomic Time Scale. So ये क्या है? National Atomic Time Scale will create the Indian Standard Time with the 2.8 nanosecond of the accuracy, and the NPL, the National Physical Laboratory, is called the timekeeper of India. And the time scale जो है which is maintained with the help of 5 kcm atomic call. So this is about the national atomic time scale. Then second one is the what is Bharatiya Nirdeshak Dravya. It is a laboratory to support test, calibrate quality assurance. Okay, and currently India in the government of India is focusing to support nanotechnology, material science, Ayush, food, agriculture and biologics through the Bharatiya Nirdeshak Dravya. Okay, so what is the role of National Environmental Standard Lab? Okay, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इसका फाउंडेशन रखा है तो इसका रोल क्या है? It will focus on the self-reliance in certification of ambient air and industrial emission monitoring equipment. Okay, and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has designated the CSIR NPL, okay, Council of Scientific and Scientific Research, okay, and verifying and certify the emissions emitted air pollution monitoring equipment. Okay, so इसके role mainly है क्या? Normally it will focus on the self-reliance in certification of ambient air and industrial emission monitoring equipment. Okay, जो air pollution जो हमारे इंडिया में जो धीरे धीरे से जो इंक्रीज हो रहा है उसको एमिट करने में ये हेल्प करेगा. एंड द ग्लोबल मार्केट वैल्यू ऑफ एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम इज टू रीच 7,000 मिलियन USD बाय 2025. ओके, सो ये जो लैब है जो हमारे लिए हेल्पफुल किस लिए? फॉर द इंडस्ट्रियल एमिशन monitoring equipment. It is as a industrial emission monitoring equipment, and the global market value of air pollution monitoring system is to reach 7,000 million USD by 2025. Okay, and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has designated the CSIR for verifying and certify the emission and ambient air pollution monitoring equipment. Okay, then what is the key objectives of National Metrology Conclave? The conclave will strengthen the role of precision measurement in various segments that has a direct implication in the economic growth of India, and it will mainly focus on establishing and developing the primary standards, accreditation, quality system, and standardization, regulation, legal metrology, and conformity assessment. So this is about the conclave. Then what is a CSIR, Council of Scientific and Industrial Research? What is it? It is the largest research and development organization in India, and CSIR has a dynamic network of 38 national laboratories, 39 outreach centers, and 3 innovation complexes. कब established हुआ? 1942 में, location New Delhi, and CSIR is funded by the Ministry of Science and Tech, and it operates as an autonomous body through the Societies Registration Act 1860. Okay, and CSIR covers a wide spectrum of streams from radio, space physics, oceanography, geophysics, chemicals, drugs, genomics, biotechnology, nanotechnology, to the mining, okay, aeronautics, instrumentation, environmental engineering, etc. And CSIR also provides significant technological interventions in many areas with regard to societal efforts, which include environmental, health and drinking water, food, southern energy, and non-farm sector. Organizations क्या है? Organization है the प्रेसिडेंट कौन होगा? इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है CSIR, उसका प्रेसिडेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. गवर्निंग बॉडी कौन कौन सी होगी? द डायरेक्टर जनरल इज द हेड ऑफ गवर्निंग बॉडी, एंड अदर एक्स ऑफिसो मेंबर इज द फाइनेंशियल सेक्रेटरी, एंड अदर मेंबर टर्म्स आर ऑफ देयर 3 years. CSIR की एक एडवाइजरी बॉडी होगी, दैट इज अ 15 member body composed of prominent member from the respective field of science, technology, and member of terms are of 3 years, and its function is to provide a science and technology input to the governing body. There are some objectives. Okay, यहाँ पर बीच में थोड़ा स्पेस हो गया है, sorry for that.
ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द काउंसिल आर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल अप्लाइड रिसर्च ऑफ इम्पोर्टेंस. ऑब्जेक्टिव क्या है? साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल और अप्लाइड रिसर्च of the national importance. Okay, of the national importance. This is the objective of CSIR, and there are some of the activities include in the CSIR objective, that is promotion and guidance and coordination of scientific industrial research, establishment and assistance to the special institutions or department of existing institutions for the scientific study, establishment and award of research studentship fellowship, utilization of the result to the research conducted, establishment and maintenance and management of laboratories, workshops, etc., and the publication of scientific paper and journals. So these are the objectives of CSIR. Okay, then note that Dr. Santi Swarup Bhatnagar, he was the founder of CSIR and who is credited with establishing 12 national laboratories. Okay, and he played a significant role in the building of post-independent science and technology infrastructure and in the formulation of India's science and tech policies. Okay, so उनका एक major role था for the formula of significant role in the building of science technology infrastructure and the formulation of science tech policies. And he currently held a member of an important position in the government. Okay, and he was the first chairman of UGC, note that, and he was awarded as Padma Bhushan in 1954 by the President of India, and he was conferred with the Order of British Empire, and he was knighted in 1941 and elected Fellow of Royal Society London in 1943. So this is about the Dr. Santi Swarup Bhatnagar. Then the next we have is the Ministry of Earth Science, and the 40th Indian scientific expedition to Antarctica launched. So what it is? So India today launched the 40th scientific expedition to Antarctica, and the 40 expedition journey will flagged off from Goa on 5 January 2021. And the Indian Antarctica के बारे में हम देख लेते हैं कि सबसे पहला expedition कब हुआ था. Expedition began in 1981, and the first trip जो थी वो comprised team of 21 scientists and supported or led by Dr. Kashim. Okay, and note that there are the 3 permanent research base stations in Antarctica: Dakshin Gangotri, Maitri, and Bharati. And as today, India has a 2 operational research station in Antarctica. First one is Maitri, and second one is Bharati. ओके, एंड ये जो मैनेज कौन कर रहा है अंटार्कटिका में, जो इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम को, द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड द ओशन रिसर्च गोवा मैनेजेस द एंटायर इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम. ओके, एंड दिस इज द 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका. एंड द 39th कब हुआ था? द 39th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2019, एंड इट माउंटेड 27 scientific projects and focusing on climate process linkages with climate change, crustal evolutions, environmental process conservations, ecosystem of terrestrial and etc. So this is about today's PIB, and if you want the PDF of this video, you can get it from our description box. And if you like the video, and then subscribe our channel to get the daily PIB analysis. Okay, thank you.